Good morning, students. Let us start with the next division of the plant kingdom, division Pteridophyta. Pteridophytes include horsetails and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purposes and soil binders. They are also frequently grown as ornamentals. Ornamentals are the plants that are meant for decoration. Evolutionarily, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, xylem and phloem. You shall study more about these tissues in chapter 6. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil. We may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle was gametophyte. But in pteridophytes, the main plant body is a sporophyte, which is differentiated into true stem, root, and leaves, as seen here in this figure. We can see the stem, we can see the leaves, as well as roots in this plant. This is Selaginella. These organs possess well differentiated vascular tissues. The leaves in Pteridophyta are small, that is microphyls, as in Selaginella, or they may be large macrophyls, as in ferns. The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf like appendages called sporophylls. In some cases, sporophylls may form distinct compact structures called strobili or cones, as in Selaginella and Equisetum. The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell. The spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free living, mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. We can see here in the diagram the strobilus on the Equisetum plant. We can see here strobilus nodes from which leaves arises, internodes, branches and rhizome. These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. Because of these specific restricted requirement and the need for the water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and narrow geographical regions. The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia, respectively. Water is required for transfer of antherozoids, the male gametes that are released from antheridia and reaches to the mouth of the archegonium. There, fusion of male gamete with the egg present in the archegonium results in the formation of zygote. Zygote thereafter produces a multicellular, well differentiated sporophyte, which is the dominant phase of the pteridophytes. Pteridophytes का dominant phase जो है वो sporophyte होता है, that is diploid. In majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kinds, that is known as homosporous. जब सारे स्पोर एक जैसे होते हैं तो इट इज़ होमोस्पोरस कंडीशन. Genera like Selaginella and Silvinia produce heterosporous. The two types of spores are produced and the condition is known as heterosporous. The megaspores and the microspores, the megaspore and microspore germinate and give rise to male and female gametophytes. Megaspore give rise to female gametophyte while microspore give rise to male gametophyte. The female gametophyte in these plants is retained on the parent sporophyte for variable time periods. अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट पर ही अटैच रहता है और वहीं से गैमेट्स प्रोड्यूस करता है. द डेवलपमेंट ऑफ द zygote into young embryos take place within the female gametophyte. This event is precursor to seed habit, considered an important step in evolution.
अभी अगर हम देखें तो हायर प्लांट्स में यही होता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ फ्यूजन होता है। बस यही सेम चीज़ फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट्स में देखी गई थी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप हो रहे थे और इसी वजह से नेक्स्ट अपकमिंग लेवल्स ऑफ प्लांट्स में सीड्स का प्रोडक्शन होने लगा। The pteridophytes are further classified into 4 classes: Psilopsida, Psilotum, Lycopsida, Selaginella, Sphinopsida, Equisetum, and Pteropsida, Dryopteris. Here we can see the fern as well as Salvinia. The next division of the plant kingdom is gymnosperms. The gymnos means naked and sperma means seed. These are the plants in which ovule are not enclosed by ovary wall. यानी कि ओव्यूल्स जो हैं वो नेकेड होते हैं और ओव्यूल्स ही आगे जाकर सीड्स में कन्वर्ट होते हैं. दैट इज़ वाई द प्लांट्स आर विथ नेकेड सीड्स. So the ovules are exposed both after and before fertilization. Gymnosperms include medium-sized trees or tall trees and shrubs. One of the gymnosperm, the giant redwood tree Sequoia, is one of the tallest tree species. The roots are generally tap roots. Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza. Example, Pinus. जैसे हमने लाइकन में फंजाई और algae का एसोसिएशन पढ़ा था, वैसे ही टेरिडोफाइट्स में फंजाई के एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं. जबकि कुछ प्लांट्स जैसे साइकस की स्पेशल रूट्स होती हैं, कोरालॉइड रूट्स, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएशन बनाती हैं. द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड एज इन साइकस और ब्रांच्ड एज इन पाइनस. द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड. In Cycas, the pinnate leaves persist for a few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity, and wind. In conifers, the needle-like leaves reduce the surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce the water loss. इस पैरा में आपको कंपैरिजन बताया गया है पाइनस और साइकस के साथ. सो प्रिपेयर द कंपैरिजन ऑफ साइकस एंड पाइनस. उसके अलावा सारे अडेप्टेशंस बताए गए हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में लीव्स को लेकर क्या अडेप्टेशंस देखे जाते हैं. द जिम्नोस्पर्म्स आर heterosporous, that is they produce microspores and megaspores. The two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls, that is special leaf which contain sporangia is a sporophyll. They are arranged spirally along the axis to form a lax or compact strobili or cones. The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate or male strobili. The microspores develop into male gametophyte generation, which is highly reduced and is confined to a limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain. That is, on male strobili, the male sporangia produce pollen grains. The development of pollen grain takes place within the microsporangia. The cones bearing megasporophylls with ovules or megasporangia, देखिए megasporangia को क्या कहते हैं, ovules, are called macrosporangiate or female strobili. तो एक ही प्लांट पर या अलग अलग प्लांट पर मेल और फीमेल स्ट्रॉबिलाई अलग अलग होते हैं. द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबिलाई मे बी बोर्न ऑन सेम ट्री एज इन पाइनस. हावेवर इन साइकस द मेल कोन्स एंड द फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्रीज. यहाँ पर भी पाइनस और साइकस का कंपैरिजन दिया है. द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस. अब ये जो ओव्यूल है इसके अंदर मेगास्पोरेंजिया के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो न्यूसेलस कहलाते हैं. उनमें से कोई एक अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके मदर सेल बनाता है. ये जो न्यूसेलस है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स और इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूसेलस प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप विथ वन मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज ओव्यूल. The ovules are borne on megasporophylls which may be clustered to form the female
कोन्स। ये एक दो भी हो सकते हैं या पूरे प्लांट के ओव्यूल्स क्लस्टर होकर एक ही कोन शेप में प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। मियोसिस से डिवीजन जब भी होता है तो 4 सेल्स बनते हैं। तो जब ये मदर सेल डिवाइड करेगा, मियोसिस करेगा, तो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। उनमें से कोई एक मेगास्पोरेंजियम के जो अंदर है वो मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्कीगोनिया या फिर आर्कीगोनिया दैट इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा। द मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट is retained inside the megasporophyll. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, male and female gametophytes do not have an independent free living existence. वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ गैमेट्स जाते हैं, उसमें भी मेल गैमेट जाता है फीमेल गैमेट तक विद द हेल्प ऑफ एयर करंट्स. They remain within sporangia. The pollen grain released is carried by the air currents and come in the contact with the opening of the ovule borne on megasporophyll. The tube carrying the male gametes grows towards archegonia in the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develops into embryo and ovules into seeds. The seeds are not covered, hence the plants are with naked seeds, hence termed gymnosperms. This was all about pteridophytes and gymnosperms, the other two divisions of the plant kingdom. So in all we have covered 4 divisions of the plant kingdom: algae, bryophyte, pteridophyte and gymnosperm. The last division, last but not least, very important, the division which comprises the majority of the trees is angiosperms, that we will cover in the next lecture. Till then, keep studying.